regarding this movie? Yeah. Well, all the secrets are going to be out on 2nd September. It's been one of my most challenging, actually my most challenging and most physically demanding films I've ever been a part of, and I worked really hard for it. So all the secrets, wait for the secrets to come out on 2nd September. I'm sure it'll be worth the wait. Being a chulbuli dabang girl to a martial art pro, how's your journey been? Well, I'm far from a pro, but I did really learn a lot for this film, and I feel it's fantastic when you get to learn something new and apply it for a film like this. It's a very satisfying feeling. But yeah, the journey has been fantastic. It's been, I've played, a great lot of characters, and I think it's all come together for this one moment for me and Akira, and I'm really, really happy and satisfied with the journey. So yeah. But still, there's lots more to come. Picture abhi baki hai mere dost. What? Why only a woman-centric film? This is your first woman-centric film. So I want to ask you questions about it. When I do other films, you all say why you don't do woman-centric films. When I do woman-centric films, you say why woman-centric film. Kare bhi to kya kare yaar. But you're killer in the role, let me tell you that. Thank you. Then then why are you asking questions? Why, what, when, where, who, how? Just watch it and enjoy. Well, कोशिश तो वही रहेगी. I do eventually want to have a career in music. मुझे singing and dancing का बहुत शौक है. This sounds like that कुछ कुछ होता है dialogue. I love singing and dancing. So yeah, but I actually do. So hopefully अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं और गाना चाहूँगी. एक सिंगल मैंने रिलीज़ किया था इश्कौले, कभी मैंने अकीरा के लिए गाया है, and I'm really happy that मेरा पहला गाना इस फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ है with Vishal and Shekhar, who were a tremendous help to me. और आगे जाकर भी मैं और गाने रिलीज करूँगी. So yeah, eventually that is the plan. सोनाक्षी, एक सवाल और कि आपने इंडियन आइडल में एक कंटेस्टेंट को प्रॉमिस किया था, उसे गाने का मौका मिला, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं खुश हूँ कि ये जो मैंने उसे प्रॉमिस किया वो विशाल शेखर के द्वारा वो it came true, and I'm really really happy for our film because Nahid is supremely talented. उसकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है. I mean, जब मैं वहाँ पर बैठी थी जज के चेयर पर, मतलब मैं सुनकर उसकी आवाज़ कुछ, I used to get goosebumps. So I'm really happy that she's been able to sing for this, and I'm happy कि I was able to keep my promise. पूछो मत यार, बहुत पापड़ बेलने पड़े. But it was very very tough to papad belne pade but khane nahi pade. Yeah, that's the thing. I think it was very very grueling, very hard training I had to go through mixed martial arts में, और I had to work on myself ताकि ये convincing लगे. ये एक बहुत ही अलग टाइप का रोल है. I don't think ऐसा पहले attempt किया गया है by a heroine in Hindi films. So I feel that for me I wanted it to look very very convincing and ऐसा ना लगे कि अरे क्या कर रही है. But I'm really happy जो response trailer के लिए मिला है, and I'm sure कि film में भी आप लोग appreciate करेंगे मेरा hard work. और ये पोज, ये ऐसे ही हम लोग शूट कर रहे थे और मैंने बस किक मार दी. I mean, to comment on the first part of your question, which was that are women taking up more central characters? Yes, they are, and I think it's about time that they did. And there are some great characters being written out for women in today's films, and I'm really really happy for that. And the audiences have become so much more accepting of what they're watching on screen. So I think it's a great time to be a woman in Indian cinema. Yeah. Now the second question, please. हाल ही में अरबाज से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि रज्जो और चुलबुल पांडे के बिना फिल्म नहीं बन सकती है. तो आप होंगी थर्ड पार्ट में हैं और कब से शूट होने वाला है, आप बताना चाहेंगे? आपने इतना सब पूछ दिया, वो ही नहीं पूछा. वो आपने सवाल मेरे लिए रखा. जो मतलब एक्ट्रेस है फिल्म में, प्रोड्यूसर से ही पूछ लेते ना, अच्छा होता. तो कुछ कंफर्म करेंगे कि क्या है शूट? आप अरबाज को कॉल कर दो ना प्लीज, इफ यू डोंट माइंड प्लीज. हेलो, अनुराग कश्यप फिल्म में है, मेन विलन है, बहुत एक्लेम फिल्म मेकर भी हैं वो. तो क्या कुछ ऑफर मिला आपको उनके साथ काम करने का, और क्या कुछ सीखा आपने सेट पे रहते हुए उनसे? नहीं, फिलहाल आई डोंट नो व्हाट ही इज मेकिंग, बट इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया एज एन एक्टर, एज अ विलन. ही इज़ वेरी वेरी मेनेसिंग, और इनफैक्ट मैंने उनसे कहा था कि ही शुड एक्ट सम मोर because he was so good in the film, and trailer में भी he's been really appreciated. उसके अलावा कुछ ऐसी बात नहीं हुई है. Yeah.
For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.